Hello, today we will discuss the new topic, that is the Laplace transform. Laplace transform and its application. Okay. Now the name of topic is Laplace transform. First of all, we will discuss the definition of Laplace transform. After that, we have to discuss the basic properties of Laplace transform and also the important examples, and in last section we will discuss the applications of Laplace transform. Okay. Now first, the Laplace transform definition of Laplace transform. Definition of Laplace transform. Definition: let f of t be a given function. Let f of t, this is function of t. Let f of t be given function defined for all t greater than or equal to 0. T greater than or equal to 0, then the Laplace transform transform of f of t is defined as L f of t. This is called Laplace transform of f of t. Okay, L f of t. This is your Laplace transform of f of t or f of s. Okay, तो देखो f of t be a given function defined for all t greater than or equal to 0. Okay, here t is variable. F of t is a function of t. Okay, f of t is a function of t. Okay, let f of t be a given function defined for all t greater than or equal to 0. The values of t starting from 0. Okay, then the Laplace transform of f of t is denoted by L f of t. L f of t, this is called the Laplace transform of f of t or f of s. F of t or f of x, both are same and denoted by and defined by, और that is क्या तो भी चलेगा, that is L f of t that is Laplace transform of f of t is equal to f of s, both are same, is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. This is your definition. Laplace transform of f of t is equal to f of s. Laplace transform of f of t is equal to f of s is equal to integration starting from 0 to infinity. Here t starting from 0. Here integration also starting from 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. This is your Laplace transform of f of t.
Laplace transform of f of t, that is f of s is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t into dt. Here this s is parameter. S is parameter, may be complex number or may be the real number. S is parameter, may be complex, may be real. Okay, so this is the definition of Laplace transform. क्या है definition? Let f of t be a given function defined for all t greater than or equal to 0, then the Laplace transform of f of t is L f of t or f of s, that is Laplace transform of f of t is equal to f of s is equal to integration 0 to infinity e raised to minus st f of t into dt. Here s is called parameter. S is parameter, may be real or complex number. Okay, this is definition of Laplace transform. Okay, then after definition we will discuss the linearity property of Laplace transform. This is important property, linearity. Linearity property. Linearity property of Laplace transform. Okay, linearity property of Laplace transform. Let f of t and g of t, there are two functions. For define the linearity property we have to use the more than one function. Okay, let f of t and g of t are functions of t greater than or equal to 0, and Laplace transform of f of t is equal to f of s. उसका मीनिंग क्या है? Laplace transform of f of t is f of s, comma Laplace transform of g of t is equal to g of s. Okay, Laplace transform of f of t, f of s, and Laplace transform of g of t, g of s. Then Laplace transform of a into f of t plus b into g of t is equal to, here a is constant, b is constant, तो क्या जाएगा? ये by using linearity property, ये Laplace transform of f of t plus, here b is constant, take outside, b Laplace transform of g of t, Laplace transform of g of t. Okay, this is called the linearity property in Laplace transform. Okay, a and b are constant. यहाँ पे क्या है? Positive sign, तो here is positive और here is negative, then here also negative. Then this is a into the Laplace transform of f of t, that is f of s plus b constant, and Laplace transform of g of t is g of s. This is your g of s. Okay, and this property is called the linearity property in Laplace transform. Okay, so first is definition and second the linearity property in Laplace transform. Okay, now we will discuss some basic results or basic formulae which are used in a Laplace transform. Okay, so some basic formulas some basic formulas
which are used in Laplace transform. Okay, तो formula number first, integration uv into dx. Here u and v are the functions of x. u and v are the functions of x. Okay, uv into dx, uv into dx. Okay, here u and v are functions of x. Choose u and v by using LIATE rule. Okay, तो suppose first is u, तो क्या जाएगा u as it is v का इंटीग्रेशन, u as it is v का इंटीग्रेशन, यहां पे लिखा है तो इंटीग्रेशन, माइनस यहां पे u है उसका डिफरेंशिएशन, यहां पे जो v है उसका अगेन इंटीग्रेशन, प्लस यहां पे जो u डैश मिला है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, u डबल डैश, यहां पे जो v है उसका अगेन इंटीग्रेशन, माइनस यहां पे जो u का डबल डैश है उसका अगेन डिफरेंशिएशन, यहां पे जो v है उसका अगेन इंटीग्रेशन, प्लस डॉट 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 डॉट. दिस इज योर फार्मूला. ओके, इंटीग्रेशन uv इंटू dx, u इंटीग्रेशन v माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, प्लस u का अगेन डिफरेंशिएशन v का अगेन इंटीग्रेशन, माइनस प्लस अल्टरनेटली. कहां तक जाना है? जब तक डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होता. ओके, तो दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज यूज्ड इन योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, नाउ सेकंड फार्मूला इंटीग्रेशन e raised to ax into cos bx into dx. Okay, integration of this, here e raised to ax, this is your infinite function, this is also your infinite function or infinite series. Then the formula of this e raised to ax as it is, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? e raised to x, उसका कोएफिशिएंट क्या है? 1, उसका स्क्वायर यहाँ पे क्या है? a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे cos का एंगल क्या है? bx, तो क्या जाएगा? b, एंगल में क्या है? bx, x का कोएफिशिएंट b, उसका स्क्वायर, इन ब्रैकेट दिस a मल्टीप्लाई टू दिस टर्म, क्या मिलेगा? a cos bx, देन cos का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? प्लस, cos का इंटीग्रेशन प्लस, देन राइट cos का डिफरेंशिएशन b sin bx. This is your formula number second. Then after that, formula number third, integration e raised to ax into sin bx into dx is equal to, same यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, e raised to ax divide by a square plus b square in bracket this e का पावर ax, a multiply to this क्या मिलेगा? a sin bx, देन साइन का माइनस, फॉर साइन माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन b cos bx. This is your formula number third. Okay, then formula number fourth, the value of gamma function. आपको मालूम है सबको, the value of gamma function क्या है? gamma of n plus 1 क्या आती है उसकी वैल्यू? दिस इज n फैक्टोरियल. कब? if n is integer, if n is integer and the value of gamma of n plus 1 is equal to, if n is not integer, at that time value of n plus 1 is n into gamma of n. This is value of gamma of n plus 1, n into gamma of n. कब? if n is not integer, n belongs to fraction, at that time gamma of n plus 1 is equal to n into gamma of n. Okay, also the value of gamma of 1 by 2, and this value is pi, gamma of 1 by 2 is pi. Okay, these are the important formulas or basic formulas
which are used in Laplace transform. Okay, also the basic formulas, for example the trigonometric formulas, this formula is also used in Laplace transform. Okay, now we will discuss the Laplace transform of some basic formulas. Next point, Laplace transform of some standard formulas. Laplace transform, Laplace transform of some standard function. Some standard function. Laplace formulas of some standard functions. Okay, we will find the Laplace formulas of some standard function. After that, I will write all these formulas. Okay. Now, first, the Laplace transform of 1. If f of t is equal to 1, f of t is equal to 1, then we have to find Laplace transform of 1. Okay. Now, by using definition, L f of t is equal to क्या मिलता है? L f of t is Laplace transform of t. क्या है फॉर्मूला आपके पास? फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st f of t into dt. Correct? This is your formula. Now put value of f of t here. F of t is 1. तो क्या जाएगा? f of t is 1 इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st f of t is 1 तो क्या जाएगा? into dt. Okay. Now find answer of this. तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर at क्या था आंसर? e raised to at divided by a. Here इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या जाएगा? e का पावर माइनस एस टी. तो उसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा? e का पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस बिकॉज इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू t. पुट अपर एंड लोअर लिमिट 0 to infinity. Put upper limit infinity तो क्या जाएगा? If we put upper limit infinity, here is minus sign, take outside तो क्या जाएगा? माइनस अपर लिमिट e का इंफिनिटी तो e का पावर माइनस इंफिनिटी आ जाएगा. क्या जाएगा? e का पावर माइनस इंफिनिटी. दिस इज e का पावर माइनस इंफिनिटी माइनस रिप्लेस t एज 0. e का पावर 0 क्या आता है? 1 होल डिवाइडेड बाय दिस एस. ओके. बट वैल्यू ऑफ e का पावर माइनस इंफिनिटी दिस इज 0. e का पावर क्या जाएगा? e का पावर माइनस इंफिनिटी वैल्यू ऑफ दिस इज 0 एंड e रेज टू 0 इज 1. करेक्ट. तो नाउ यहाँ पे क्या जाएगा? 0. तो क्या मिलेगा? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस तो दिस इज योर 1 by s. तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is 1 by s. तो क्या मिलेगा? From this we get the Laplace transform of 1 is equal to 1 by s. तो आंसर क्या जाएगा? Laplace transform of 1 is 1 by s. Okay, here f of t is 1. तो Laplace transform 1 is 1 by s. Okay, Laplace transform of 1 is 1 by s. Now second, the Laplace transform or f of t is equal to e raised to at. a greater than 0, t तो greater than 0 है. Now we will find the Laplace transform of f of t is equal to e raised to at. By definition, f of t is equal to integration 0 to infinity e का power minus st f of t into dt. Correct. Now the Laplace transform of 1 क्या जाएगा?
हियर वन इज एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है अभी यहाँ पे ई रेस टू ए टी, तो यहाँ पे क्या जाएगा ई रेस टू ए टी, दिस इज यूर ई रेस टू ए टी करेक्ट, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, आई विल ड्रॉप दिस, हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी इज ई रेस टू ए टी करेक्ट, इंटू क्या जाएगा ई रेस टू ए टी इंटू डी टी करेक्ट. नाउ सिंप्लीफाई दिस, हियर ई का पावर माइनस एस टी, हियर ई का पावर ए टी, तो क्या जाएगा वो, दिस इज 0 टू इंफिनिटी ई का पावर माइनस एस टी प्लस ए टी इंटू डी टी करेक्ट. नाउ टेक माइनस कॉमन, वी गेट 0 टू इंफिनिटी ई का पावर, टेक माइनस कॉमन, माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा ये माइनस यस टेक टी आउटसाइड इंटू डी टी. ओके, टेक माइनस कॉमन, देन बाय यूजिंग द सेम फार्मूला इंटीग्रेशन ई का पावर ए टी, आंसर क्या आता है 1 अपॉन, दिस इज यूर ई का पावर माइनस ए यस होल डिवाइडेड बाय विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, डिवाइड में क्या जाएगा माइनस ए माइनस यस, पुट अपर एंड लोअर लिमिट. इफ वी पुट अपर लिमिट एज इंफिनिटी, टेक माइनस आउटसाइड, तो अपर लिमिट इंफिनिटी ई का पावर माइनस इंफिनिटी क्या जाएगा 0, जो अभी हमने देखा है माइनस, तो अपर लिमिट क्या जाएगा 0 माइनस लोअर लिमिट ई का पावर क्या है 0, तो ई का 0 क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ये माइनस यस करेक्ट, एंड मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस साइन वी गेट माइनस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 1 अपॉन ए माइनस यस, 1 अपॉन ए माइनस यस. दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस टू ए टी. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई का पावर ए टी क्या था आंसर 1 अपॉन ए माइनस यस, आंसर इज 1 अपॉन ए माइनस यस. ओके, तो आंसर क्या जाएगा 1 अपॉन ए माइनस यस और एस माइनस ए, आंसर इज 1 अपॉन एस माइनस ए, सॉरी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी गेट एस माइनस ए. The Laplace transform of e raised to at, आंसर इज 1 अपॉन s माइनस a. ओके, तो देखो क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम दिस टेक माइनस आउटसाइड, वी हैव टू टेक माइनस आउटसाइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस a, हियर इज माइनस a, सॉरी हियर इज s माइनस a. ओके, माइनस आउटसाइड निकाला तो s माइनस a, हियर इज ऑल्सो s माइनस a, here is also s minus a, तो यहाँ पे क्या जाएगा s minus a, here is also s minus a. ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा s minus a. ओके, दिस इज योर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दिस माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा प्लस, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू a t इज 1 अपॉन s minus a. ओके, एंड सपोज वी हैव टू रिप्लेस एनी, a इज एनी कांस्टेंट, वी हैव टू रिप्लेस a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा s माइनस 2, ये इज इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन s माइनस 2 3, जो भी वैल्यू आप ये है. ओके, तो दिस इज योर सेकंड फार्मूला, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर ए टी इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ए, 1 अपॉन s माइनस ए. ओके, नाउ नेक्स्ट, नाउ आई विल राइट द डायरेक्ट फार्मूलेज. नाउ नेक्स्ट फार्मूला, the Laplace transform, third, now I will write directly the Laplace transform of e का power minus at, this is your 1 upon s plus a, 1 upon s plus a. The next formula number 4th, the Laplace transform of cos at, Laplace transform of cos ए टी, तो cos का क्या जाएगा cos यस, यहाँ पे क्या है cos यस, तो यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos यस अपॉन. ओके, द नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5th, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी, फॉर साइन ए टी ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर cos यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, for sin
a upon a square plus a square. Then next, sixth, the Laplace transform of cos hat. The Laplace transform, this is your Laplace transform. Laplace transform of cos hyperbolic at. This is your s upon यहाँ पे क्या था cos at s upon a square plus a square, but for hyperbolic we get s upon a square minus a square. S upon a square minus a square. This is your answer. The next, 7. The Laplace transform of sin hat, that is sin hyperbolic t. Okay, so we get Laplace transform of this a upon a square minus a square. Okay, for sin a upon a square minus a square. कब? hat. Then next formula number 8, the Laplace transform of t raised to n. Okay, t is any number, then Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 divided by s raised to n plus 1. So Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 divided by s raised to n plus 1. Okay, this is general. And if n is integer, for integer the value of gamma of n plus 1, this is your n factorial divided by s raised to n plus 1. Kab? If n is integer. Okay, तो देखो, the Laplace transform of some standard functions. First formula, Laplace transform of 1. Answer is 1 by s. Second, Laplace transform of e raised to at. Answer is 1 upon s minus a. Third, Laplace transform of e raised to minus at. Answer is 1 upon s plus a. The next, Laplace transform of cos at. Answer is s upon a square plus a square. The next, Laplace transform of sin at. Answer is a upon a square plus a square. The next, Laplace transform of cos hyperbolic at. Answer is s upon a square minus a square. यहाँ पे क्या था? a square plus a square. यहाँ पे a square minus a square. The next, sin hat, तो क्या जाएगा? ये अपॉन a square minus a square. Then next, Laplace transform of t raised to n, gamma of n plus 1 divided by s raised to n plus 1. And if n is integer, then gamma of n plus 1 is n factorial divided by s raised to n plus 1. These are the basic formulas. Okay, and by using proper definition, we have to find answer of all these formulas. Okay, these are the Laplace transform of some standard functions. Okay, so in this lecture, we have to discuss about the definition of Laplace transform. After that, the linearity property of Laplace transform. The next, the basic formulas which are used in Laplace transform, and the Laplace transform of some standard functions. Okay.